कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकाम् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। सानिध्याचा अनुभव जातस देश कालाच गणना असता महिमा असता जाल्यारी आमकां मस्त अधिकार ना ताजो उल्लेख करूंक जर समाजा तर्फेन तुमी कल केल्ल्या तें आमी स्वीकार करता ती आनी गुरुचरणी अर्पण करता ती। कसले एक निमित्त घेवन आमगेल्या आध्यात्मिक साधनेंतू एक सामाजिक बरेपण आनी संघटनेंतू ते क्रियान्वित जाता म्हळ्यार निश्चित रूपेण स्वाम्यांगेली प्रसन्नता सगळ्यांकय प्राप्त जाता। वॉट एवर बी द रिजन द कॉज आनी तांतू एक व्यवस्थित रूपेण केल्या आतां अशीच संक्षेपान उल्लेख मात्र जाला। आमगेल प्रेमास्पद प्रवीण मामान सांगिल्ले इतले वर्सांतूल कार्यक्रम तशीची चैतन्य गुलवाडी मामान सांगिल्लें कोण कितले केलें इत्यादी जाल्यार हांतू शिकयतल्यांनी टेक्निकल सपोर्ट म्हणटा ती दिवच्यान तूं कितकी लोकांत भाग घेतलो एकच उद्देश एक व्हड सेव करतस तांतू हांवें माय कॉन्ट्रिब्यूशन टुवर्ड्स इट। सो पार्टिसिपेशन मस्त जालें। सो फॉर जस्ट द 10-20 sadhakas who participated, there were much more who made it happen. हिंदीन तसो आमची गेल्यान तसो इंग्लिशान तसो एक्सप्लेनेशन्स प्रनंसिएशन हें करून एवरीबडी बेनिफिटेड तें आमकां विश्वास आसा। Because the connect with the mutt happened. एक दिव्य शक्ति सांगात मठ हमारे it is not just the building. Remember मठ मकल्ले can I define? Very very difficult. अजून एक ताजे महिमा कळतस मात्र म्हाका हांव कल ताजें वर्णन करूं वचूं और डिफायन करूं वचूं। मठस छात्रावास समाजाक घेवन मठ जाता। एक लीगल कॉम्पोनेंट तांतू ट्रस्ट म्हूण करूं देर आर बिल्डिंग्स लोकेशन वायज येस वी रिस्पेक्ट दोज बट इट इज मच मोर देन दॅट एंड दॅट इज हाव वी आर कनेक्टेड। सो तांतू आमी पळयता ती एक विलक्षणता येता आसा। वस्तुतः ह्या दिवस आमी कली उलोवचें म्हूण आसना सहन करचें जाल्यार तुमगेल एक काल 2 सूर जालेलें प्रस्तुतीकरण मस्त खुशी दिसली। कितलीं वर्सां जालीं आतां 25 वर्सां जालीं 28 की 30 जावच्या येयलीं 27 आई एम परमिटेड आज धोर नो इफ आई गो फंबल अ लिटल विथ नंबर्स आज उठायन आपण चेक केला आई एम फीलिंग द सेम आनी स्फूर्ती मात्र आशिल्ली। सो वाडीन तो कार्यक्रम जाता यंगस्टर्स आतां ह्या पंता बिपिन नाडकर्णी मामान अशी उल्लेख केलो रिहर्सल्सा खातीर सो दे केम ऑल द वे जस्ट टू प्रॅक्टीस एंड मेड दॅट वंडरफूल प्रेजेंटेशन। नाटकांचे आमचे काही भंय दिसता बट प्रवीण माम एश्योर्ड मी इट विल बी ह्युमर आनी ट्रॅजिक कॉमेडी कशी काली तुमकां ताजें वर्णन मेळ्ळेलें
So it was beautiful. It was just seriously very interesting, very nice. आणि वाडीच लोक मेरी फ्रॉम क्रेडल टू स्टेजच तांगेल डायरेक्ट तांकले ट्रेनिंग जावं का म्हणना सेल्फ कॉन्शियसनेस स्टेज कले आसना बिंदास वॉट एवर इट वॉज अ गुड स्टार्ट खुशी जाली हें सगळं पळोवन हें पळयतनाच अर्पण करूं जाता कशी गुरूंगेल अनुसंधान जाता स सानिध्याचे अनुभव जाता स हें पळयात हें तुमगेल लिला म्हणचे साध्य जाता ओ बापरे हें कशी सांबाळचें तुमगेलें रक्षण जाय म्हणत म्हणचे प्रश्न ना हांव तितलो खुशीन जाता सो कोणाकय यो कर चिकेची काम गिव मी 2 hours in a month 1 hour in a week maybe 1 hour every day depending on your availability of time तितलें आमी सांगता ती कल्याक म्हाका गरज आसा म्हणून तुका गरज आसा म्हूण सांगचें म्हाका धैर्य आयल्या पयलीं दाक्षण दिसताली तुगल बरेपण जातलें कितलें की प्रायश्चित कोरून वचना तिलें जस्ट एक मठाचे सेवेंत आयिल्ल्या मिती कौटुंबीक सुद्दां एक कितलें मल असं वतलें तुमकां कळश ना सुद्दां सो मागीर तुमगेलो पुरुशार्थ कॉन्क्रीट जाता इफ देर आर डेट्स you go on but you are just barely paying off the interest forget the principle what life is that ऋण असल्यारी जीवन जायना ऋण मोचन जावं का how does that happen देव कार्य पितृ कार्य वरल्या करता ती कितल मटाक प्रश्न येता तितल करता ती बट आनी कसले वरल्या ते वच काम हांची जावं का निश्चित रुपेण आमी पळयता ती जस्ट द कनेक्ट विथ द मठ प्रत्यक्ष पळयल्या चॅक करून पळयल्या म्हणूची खुशी जाता इतल म्हणून एक धैर्य आयल्या मेरी निश्चित आमी म्हणलेल बारी स्वाम्यांनी आपणाली शक्ती प्रकट केल्या म्हाका अनुभवांत हाडल्या आनी आय कॅन सी दीस कृतज्ञतापूर्वक हें सांगचें अभिमानान न्ही अभिमानान अशें स्वाभिमानान आपणालें हांव कोणालो म्हूण हांव पयलें हॅव टू एस्टॅब्लीश देन आय एम रिलॅक्स्ड आय बिलॉंग एंड देरफॉर आय कॅन डिलिवर सो तांतूं तुमी आपणाल स्कील सेट्स घेवन येता ती आमकां आश्चर्य जाता कौतूक जाता आनी इतलेंच आतां कळटा स्वाम्यांक गेलें ह्या स्थानारी हांव कल सांगचें कल जालेल मागशी जाल्यारी निश्चित तांणी सांगिल्लें मुखार आमी कोण घेतात म्हणून तुमी कोण स्थळ सेवेंत आशिल्लीं सान्नाशिल्लीं का तुमकां कडेन आसा अधिकार हाडून सुद्दां तांणी जी आमी वाचता ती पुराणांतूं पुराण न्हय जाल्यार ज्ञानेश्वरी ल्हानतूं वयना तो वेद पाठ करता आशिल्लीं आनी ते रड्ड आयलो ताल मुखांतर सुद्दां करून घेतलें सो आमगेले अधिकार हाडून आमल्याक थानू सेवा करून घेता ती सो तितलें एक आश्वासन मेळ्ळें आमी प्रत्यक्ष पळयतच ती त्या शक्तीचे एक प्रभाव जाल्यार तांतूं ते अधिकार हाडयतना कल अहंकाराचेर प्रहार जाता ते सहन करूंक धैर्य आस आनी भक्ती असं अर्पण करूंक आपणाल सर्वस्व तळ कृतकृत्य ह्या जीवनांतूंच एक पूर्णता येता बता रहे थे ये एक ऐसा दिन है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो ही अच्छा पर फिर भी इतने कार्य चल रहे हैं तो कुछ तो बोलना रहता ही है पूज्य श्री की ऐसी असीम कृपा है ऐसा अनुग्रह है कि हमारे साधना में हम 2 अंश को लेते हैं आंतरिक जप ध्यान तक और बाहरी सेवा सेवा के कारण शुद्धि आती है आंतरिक साधना के कारण तीव्रता आती है अंतर्मुख होता है जीवन सफल होने लगता है इसमें अधिकार लाना जो समर्पित भाव से सेवा करता है उसमें अधिकार लाते हैं उसे दिलवाते हैं ये गुरु शक्ति ऐसे करती है इतने सालों के बाद ये प्रत्यक्ष अनुभव मेरे जीवन में तो है ही प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ आनंद ले रहा हूँ जिनसे संपर्क होता है उनमें भी देख रहा हूँ जितनी कला हो अदरवाइज सक्सेसफुल 50% ऑफ द टाइम 70-80% ऑफ द टाइम मठ सेवेन तो एक परिष्कार्यात असं कार्य करतना कशें कितलें समर्पित जावन करता सो लर्न कितलें एक्साइटमेंट आसता कितलें एक कन्फ्युजन शें आसता भायर
संघर्ष तो होता ही है काम करते समय, पर जब हम समाहित होकर वो अर्पण करते हैं तब एक अलौकिक विश्व ही खुलने लगता है, गुरु क्षेत्र खुलने लगता है और बड़ी ही एक निर्लिप्तता आने लगती है। I had praised you, I had said I'm very proud, I couldn't catch what you were saying. I'm very proud that I have a president who is so tech savvy. You have, even the bug is e-colli kahin, so virus is also digital when he's been able to get the people, motivate them. Capacity as अशी लोक मेळत असती हांवें कसलें आका कलेमा सामान गेलें इतलें आशिल्लें आमकां कल त्रास जाला मुखार जावं नजम माऊली मत वही के ना जन्म दिलाने वाली माता रहती हैं, सब है माँ तो फिर और क्या कहें, प्रशंसा थोड़ी की जाती है, पर एक रहता है ना, कहती है ना माँ कहेगी मुझ पे जो गुजरा मुझे तो दुख हुआ वो आगे मैं नहीं होने दूंगी। तो ये शक्ति प्रत्यक्ष बता रही है, उसको पहचान के हम यहाँ पे आए हैं और उस आश्वासन को लेके आश्वस्त होके और भी अच्छी तरह से काम समाज में करने सन्नद्ध हुए हैं, सज्ज हुए हैं। पर याद रखिए अंतर्मुखता की आवश्यकता है ही। सो आई डू अप्रिशिएट चैतन्य गुलवाडीज comment कि once having taken the sankalpa didn't succeed is not good. Don't natmanam avasadayet. Don't let yourself down. Plan out well. One mala, how many minutes is it going to take? Less than 1 minute? Okay, you drag also 1 minute, 2 minutes max, and you have to skip. No, prioritize your life. Something is gone wrong. Especially 1 year or 1 month, 2 months, Navratri 10 days, sankalpas that are taken should not be broken that easily. I don't say they get broken, most of the time we let them break. So don't. That is how you can strengthen your sankalpa shakti. Otherwise you become adamant, very, in the attempt of becoming determined, you become adamant because you start inflicting on others. But something that you have accepted to discipline yourself, intelligently decided, a little more time I have to make for this, and then you find, oh, I have skipped 2 days, I have skipped 3 days. That's not a good sign. So take your sankalpas seriously. The Kshama Yachana comes later, and definitely Guru Anugrahasa, the Kshama will be done. But what about the self-betrayal? Coming out of that will be a very laborious process. So be very careful of sankalpas that are taken. And our sankalpas are very moderate. I am very embarrassed to hear that 1 mala sankalpa is taken. I would have settled for 15 or 20 at least. So we have to go to that. 1 minute it takes for an average person to do 1 mala of any mantra that I have given. So 1 minute is not very impressive. Add a little more. Kahin sir? Atkorka. Karne 15 minutes, okay, 10 minutes at least, and then let's see. So Ashasa, so आज एक की प्रार्थना करची, त्वं माता पितरौ त्वमेव सुहृदस्त्वं भ्रातरस्त्वं सखा, त्वं विद्या त्वमुदारकीर्तिचरितं, त्वं भाग्यमत्यद्भुतं, किं भूयः सकलं त्वमीहितमिति ज्ञात्वा कृपा कोमले श्री विश्वेश्वरी संप्रसीद शरणं मातः परन्नास्ति मे. आचार्य तंगेल दर्शन जायना पड, देवील दर्शन जायना पडे, तंतुल श्लोकाचे उद्धरण आमी दित्त असताती भुवनेश्वरी महास्तोत्राचे. कल्ले सांगचे तूं जावसू, त्वं माता त्वं पितरौ त्वमेव सुहृद, सुहृद म फ्रेंड, तुंची भ्राता म्हणेल, तुंची विद्या मक्कल लायल्या हांव प्रकट करता, तुंची कीर्ती कसले प्राप्त जाता, तुंची. रिकग्नायझिंग दॅट हांव म्हणलेलें, ओ समथींग आय कूड, आय एम सरप्रायज, आय कूड डू बेटर दॅन इवन आय हॅड एक्सपेक्टेड. दॅट्स द फर्स्ट गुरु अनुग्रहाचे. देन यू गेट accustomed to it,
and you don't pay too much importance to your ahankar, otherwise you will be rolling in that. हां म्हूण सुट्टना फुडें, let that happen. वय नवें थंय शिरकत गाडी, मगल न्हय जाल्यार हांव ना सोड तें. ताव वळतें कीर्ती सय तुगलीची, तूं दाखोवन दितस, आपणाल कार्य तूं करतस, म्हाका निमित्त केलें, हांव सत्य निमित्त जावं. दॅट प्रार्थना हे ज्ञात्वा कृपा कोमली. कसलं आस की कसलं अनुभवांत हाडटा, कल क्षेत्र प्रदान करता, कल करून घेता, तुमची तुजे शिवाय आनी कलेन या. तें एक तुमगेलें अनुसंधान सूर जायना फुडें, सतत जायना फुडें. strengthened by the sankalpas you take for smaller anushtans also, सानिध्याचो अनुभव जातलो शाश्वत. इतलीच आमी प्रार्थना करची. आनी आमकां कले सांगचे ना, मुखावेल कार्यक्रम आसा ती खंयची एक प्रिती नाय, भक्ती नाय, हो जे स्वितापूर्वक तुमी साधन केल्या वैयक्तीक रुपेण म्हाका मस्तची खुशी जाता आसा. संतोष म्हणू जायना, रॉंग वर्ड, खुशी जाता आसा. आय एम रियली टच्ड and I'm impressed. Kalmari, getting 10 people together and accomplishing something is very difficult, spreading over all time zones also. So एक सान प्रयत्न नहीं है तुम्ही केलेले, होड एक हाज्याने तुमगेल जीवनांतू सुख शांती समृद्धी भरपूर मात्रांत मेळ्ळो म्हणून मी परत परत गुरुचरणी प्रार्थना करता ती. आनी त्या मेळ्ळेल्याक खंय थान मेळतस म्हूण तुमगेल बुद्धी जागृत जाल्ली म्हूण जाल्यार तुमगेलें जीवन सफल जातलें, आमकां विश्वास आसा. आतां एक सानीक भजन करुया. जयतु जयतु जगज्जननी चरणम्, जयतु जयतु जगज्जननी चरणम्. श्रुतिचूडाम्बुजराजितचरणम्, श्रुतिचूडाम्बुजराजितचरणम्. विधिहरिसुरारिवन्दितचरणम्, विधिहरिसुरारिवन्दितचरणम्. नगेन्द्रमानसनन्दितचरणम्, नगेन्द्रमानसनन्दितचरणम्. जयतु जयतु जगज्जननी चरणम्, श्रुतिचूडाम्बुजराजितचरणम्. भवमज्जन जनतारकचरणम्, भवमज्जन जनतारकचरणम्. भावितहृत्तमवारकचरणम्, भावितहृत्तमवारकचरणम्. जयतु जयतु जगज्जननी चरणम्, श्रुतिचूडाम्बुजराजितचरणम्. आसुरदलबलमर्दनचरणम्, आसुरदलबलमर्दनचरणम्. दिव्यवृत्तिबलवर्धनचरणम्,
बलवर्धन चरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजराजितचरणम् संवित्साधनसुलभ्यचरणम् संवित्साधनसुलभ्यचरणम् संविद्वेदिशिखामयचरणम् संविद्वेदिशिखामयचरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजराजितचरणम् श्रुतिचूडाम्बुजराजितचरणम् आता थंय जाल्लेले कार्यक्रम वैदिकान केलेले भोग आमटी संपन्न जाले मस्त वैभवान विजृंभणेन केलें आनी तुमी सगळीं यजमान जावन आयलीं आमकां मस्त संतोष आसा ही तुमगेली एक इच्छा तुमी प्रकट केल्या आनी कल प्रवीण माम वॉट हॅव यू लायन्ड अप नेक्स्ट 60 कनकाभिषेक स्पेशल म्हूण आशिल्लें ते 60 पेक्षा चड लोक तयार जाल्ले सो तीची तुमगेली इच्छा 60 मात न्ही आनी एक थोडे वर्सां चिकेची बरें जावं म्हणून आमी तशीच घेता ती व्हड विशयान तूं सन्न विशयान तूं तुमगेली एक प्रिती सहजता आमी पळयता तीची विफल जावन तीची श्रद्धान तूं भक्तीन तूं परिणत जावं बिकॉज वेन आय स्टार्ट डिलींग विथ यू चिकेची एक दुख्ख जावची संभावना आसता अयो हांवें कल्याक म्हणलें म्हणून बेर विथ मी कले द्वेशान केलेलं न्हय पळय कोण चिकेची सेव करतसो तांकां कळटा कसल्याक म्हणून एकू उद्देश आमकां ह्या जिवनांतूच एक सफलता प्राप्त जावंका हें तात्कालीक सुख दुख्ख आमी एनिवे भक्त आसा ती हांग एक की विलक्षण आनंद येतस निष्कपट जावन आमी करतस ती आंतरीक बाह्य कपटता वी आर फेसिंग एंड सेईंग नो वयना हगूर हगूर जाता एक व्यक्ती परिवर्तन जावंक कितलो जन्म जाता ती सगळें समाज आमी संघटीत जावन जाता आसा ती इतलो शीघ्र जाता आसा हें कौतुका विशय कोणाल कौतुक विसर नाका ती अर्पण करा ती खुशीन करया गोमटे कोन करया हांगा दादाजी खंय आसा आमगेले आतां हें सगळें तिथी लायकान कल घेतल्या तावळ आय थिंक यू हॅव टू ब्रिंग निजार माम हियर आतां आमी चड कले उलोवंक एक हें म्हाका बूक दी हिरलेख हा एक प्रती हांवें म्हणून आइए जी I'm so happy to see. I had met him just after COVID, after how many years? 40 years. After 40 years. He didn't know why I had called him here, but he came. And today he was not called, but he has come.